morning, friends. Good Let's morning, start with, sir. yeah, very, very good morning. So we'll start with the topic of operating system, one of the very, very famous topic of operating system, that is file allocation. File allocation is very, very simple topic, one of the scoring subject that operating system that you all have. I'm sure that in today's session, you all will get the meaning of file allocation, what are the methods of file access, and how we can able to apply all these file allocation method that we will study today. So let's start with the session. We'll focus directly on prerequisite of this topic. And the prerequisite for this particular topic will be free space management. Free space management, we need to understand what exactly is this. Here, you can understand that this free space, this word itself indicating that whenever we are working with file system, always remember file system is all about secondary storage. Till date, you have seen the word memory in operating system, that is mainly representing RAM, that is random access memory, one of the volatile memory. But when we are talking about file management, it is all about non-volatile data. Means when you store data, it will be permanently saved, or we can say it is persistent storage. When we use the word persistent, it is all about secondary memory. And secondary memory is here normally named as disk. So in operating system, there are basically two terminology. One is memory, always associated with RAM, and another one is disk, always associated with what? Secondary memory. So whatever diagram which is in front of you today, okay, this is the diagram where you can understand. This is the diagram of, okay, this is the diagram of disk. Okay, this is the diagram of disk, and here you will understand that this is known as block. Okay, this is known as block. So block is divided like 0 1 2 3 4 dot 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 32. Okay, so there are basically 32 blocks, and one block may have size. Okay, one block may have size. Means, for example, suppose here if I say that block having size 512 bytes, 512 bytes. If I say this, it indicates that one block has 512 bytes. Likewise, we can compute the size of this particular disk, or size of this particular hard disk. How we can able to compute? We know that there are 32 blocks, 0 to 32. Okay, this is the 0th block and this is 31st block. It means that there are total 32 blocks. So how will you compute the size of this hard disk? Very, very simple. You need to simply apply 512 into 32 will give you what? The size. Okay, 502 into 32 will give you what? Size of disk. This way we can able to compute the size of disk. It is very, very simple to compute. So nowadays, whatever hard disk which are coming, that you are now listening, that 1 TB hard disk is there, 2 TB hard disk is there, where number of blocks will be more, as well as size of one block will be again more, and by which we can able to compute the size of any of the hard disk. Now we need to focus on the concept free space block or free space management. Now here you can see here this particular part, okay, that is free space list overhead. Okay, free space list head, which is pointing to this block, which is pointing to this block. Then this block is pointing to next block. Next, it is pointing to this, it is pointing to this, it is pointing to this, it is pointing to this. Likewise, you will understand all these are free blocks. Free blocks means what? These blocks are not occupied, no data is stored into these blocks. Okay, and whenever we have to allocate data into file, we need to allocate blocks of into hard disk, and for that we need to study first where is this free space which is available. Once we understood that, suppose any file having size, okay, which required two blocks, we need to first identify whether our hard disk is free or not, and that whether the hard disk is free or not, that can be identified using free space management. This free space list head will give you an idea how many blocks are free.
And once you understood that there are two blocks which are free, then you can able to store your data easily. So this is all about file or free space management. So this you need to understand. Okay, and once you understand this, the concept of free space management, it will be easy for you to focus on the next topic that we have to study today. So our agenda of today's session is file allocation method. I once again I'm repeating that this is really very simple topic and you can score easily. Focus in this particular session. I'm sure this particular topic will be forever in your mind. Okay. So file allocation method, and allocation method refers to how disk blocks are allocated to files. तो फाइल्स आपको समझना जरूरी है. फाइल्स जो भी होती है वो हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी डिस्क में हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. दैट मे बी योर हार्ड डिस्क, दैट मे बी योर पेन ड्राइव, दैट मे बी रेड डिस्क, एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क which will be there. Okay, so when you stored information in the form of file, it means that it is physically present into disk. Okay, it will be physically present into disk, and that is known as persistent, or we can say it is permanent. Data will be saved permanently into files. So that is the beauty of file. Let's focus on this methods. There are basically three methods of file allocation. Very first one is contiguous allocation. Now the word contiguous, continuous, one and the same thing. Continuous यानी क्या, एक के पीछे एक ब्लॉक जो भी है वो उसको allocate करके देना is known as contiguous allocation. So you can see here the two blocks are continuously allocated, means this count is one of the file. Okay, started at 0th block. It is started at 0th block and its length is 2, means consecutively the first and second block is given to it. Okay, so continuous allocation is known as this. Continuous, one of the same thing. Again, you can observe here, let's say take an example of mail. It starts at 19 and continuously 6 blocks are allocated. Okay, I'm talking about this file. See that it start at this, then it takes what, these blocks and this block. So continuous space is allocated from 9 to what, 24. Okay, sorry, from the 19th block to 24th block, because the starting element itself is 19. So this you will understand. Okay, this is known as contiguous allocation, where the file is allocated contiguously. Okay, we'll go in depth in this particular part later on. First, you need to understand the overview of contiguous allocation, then linked allocation and index allocation. So next topic is linked or chain allocation. Now linked or chain allocation, here you need to understand that there will be file or there will be a directory. You need to understand the concept of directory. Okay, every file is normally stored in the form of directory. There will be a table, file allocation table. You might have heard this particular word, file allocation table, that is FAT, or nowadays it is NTFS. Okay, in case of Linux it is EXT. Okay, that is extension ext3. Likewise, there are various standards of what file allocation table. I'm talking about FAT, file allocation table. So what this FAT is, or what this directory is, this directory is actually mapping your file physically. Your logical file is mapped physically. अब मैं लॉजिकल और फिजिकल ये वर्ड क्यों बता रहा हूं, ये आपको समझना थोड़ा जरूरी है. Okay, logical means what? Suppose we say that my file is stored somewhere in C drive. Okay, so C:/ and the name of file will be there. For example, suppose we are talking about, we have created one of the file, that is file allocation.txt. Okay, you have created one of the file allocation.txt. जब भी आप ऐसा कोई फाइल क्रिएट करोगे नोटपैड में जाके उसको सेव करोगे, तो आपको नाम क्या पता होता है, मेरा जो भी फाइल है ये सी ड्राइव में, और उसका नाम क्या है, फाइल एलोकेशन डॉट टीएक्सटी. तो जो नाम हमें पता होता है, जो यूजर को अंडरस्टैंडेबल नाम होता है, दैट इज नोन एज लॉजिकल नेम. ओके, दैट इज नोन एज लॉजिकल नेम. Okay, so logical name is normally understood by user. Okay, and there is one more concept, that is physical name. Okay, there is one more concept, that is physical name. अब physical name यानी क्या, ये आपको समझना जरूरी है. Physical name means the physical address of that particular file.
सो व्हाट विल बी योर लॉजिकल एड्रेस? सी कोलन, यानी हम लोग लॉजिकल एड्रेस किस तरीके से बोलते हैं यहाँ पे वो आपको समझना जरूरी है। लॉजिकल एड्रेस विल बी सी कोलन स्लैश, और जो भी आपका फाइल का नाम है फाइल डॉट टी एक्स टी, सपोज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल नेम। ये एग्जाम्पल जो भी है ये किसका है? लॉजिकल नेम। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज लॉजिकल नेम। नाउ अंडरस्टैंड फिजिकल नेम। फिजिकल नेम यानी क्या? कौन से डिस्क में ये जाके स्टोर किया गया है। सो यू नीड टू गिव हियर डिस्क नंबर, यू नीड टू गिव disk block number. Once you get that disk block number, then you can understand the file is stored like this. But only if the file is stored into only one block, then one disk block number is enough. But if the file is stored into multiple blocks, then you need to give what? You need to give its starting and ending point. Its starting and ending point in case of linked allocation. In case of contiguous allocation, okay, in case of contiguous allocation, you need to mention the name of file. Suppose here the name of file is f, okay, its starting point is 6. Its starting point is what? 6. And how many blocks are allocated continuously? 2 blocks are allocated. So that you need to understand. So students, you need to focus on this particular part. Here directory is ultimately known as FAT, that is file allocation table. Okay, and example of this particular FAT, you might have seen, you might have heard the word NTFS, or you might have heard the word ext. This NTFS and ext, these are the words, okay, ext, sorry, ext, these are the words. Normally this NTFS is normally there for Windows operating system, and ext is the file location table of given mainly for Linux operating system. Mainly you are using this too. Okay, now the today's question for you will be what is the file allocation table or fat entry for Apple operating system. So those who are using iOS operating system, okay, for that today you have what? One of the assignment. क्या assignment मैं आप लोगों को दे रहा हूँ friends? Assignment will be what? You need to identify the name of file system for iOS. ओके, iOS, ये iOS के लिए आप लोगों को क्या करना है? यू नीड टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फाइल सिस्टम। ओके, तो ये आप लोग आइडेंटिफाई करके रखिए, और ये आप लोगों को क्या करना रहेगा? आपको जब भी आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का गूगल क्लासरूम है वहां पे आपको इसका नाम जो भी है वो देना रहेगा कि व्हाट इज द फाइल सिस्टम विच इज there at the back end of iOS operating system, heavily used for Apple kind of what computers or laptops or MacBooks or any of the iPhones. Okay, so that you need to understand. This is what the question, okay, that you can answer. Okay, so let's talk about what this FAT, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंटिग्यूअस एलोकेशन में आप लोगों को सिंपली क्या चेक करना जरूरी है? कंटिग्यूअस एलोकेशन में आप लोगों को ये चेक करना जरूरी है कि यहाँ पर फैट एंट्री किस तरीके से होगा। ओके, यहां पर देखिए फैट एंट्री इज डिफरेंट, और यहां पर भी फैट एंट्री क्या है? डिफरेंट है। तो फिलहाल मैं इसको फाइल एलोकेशन टेबल बता रहा हूं। एंड व्हाट फाइल एलोकेशन टेबल इज डूइंग? फाइल एलोकेशन टेबल इज सिंपली, ओके, दिस फैट इज मैपिंग लॉजिकल एड्रेस। ओके, दिस फैट इज मैपिंग लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। ओके, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि लॉजिकल नेम कहाँ पर दिए गए हैं। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज द लॉजिकल नेम। ओके, यहाँ पर आप लोगों को समझना जरूरी है कि लॉजिकल नेम कौन सा है। ये यहाँ पर दिया गया है, दिस इज लॉजिकल नेम, है ना। फाइल को हम लोग समझ सकते हैं, काउंट वगैरह वगैरह, ये लॉजिकल नेम है। और फिजिकल नेम कौन से है? तो फिजिकल नेम आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि दिस इज अल्टीमेटली व्हाट? फिजिकल नेम। यहाँ पर ये जो भी दिया गया है फिजिकल नेम। तो whatever which is highlighted using red is your logical name, and this is known as physical name. So ultimately what directory is doing or what fat table is doing, ये simply क्या कर रहा है? It is mapping, okay, it is mapping your logical address to physical address. Okay, it is not doing anything great, it is simply mapping your
लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस हमें पता होता है, जैसे मैंने एग्जांपल अभी अभी आप लोगों को दिया था, आप लोग कोई पर्टिकुलर फाइल में लिख रहे हैं c:/file.txt इज योर नेम, दैट इज लॉजिकल नेम। एग्जैक्टली वो हार्ड डिस्क के ऊपर कहाँ स्टोर किया गया है, तो वो उस ब्लॉक का नंबर आएगा। अब आप बोलोगे सर हम लोगों ने तो जो सीखा है फाइल के बारे में, वो तो ऐसा कुछ सीखा हुआ था आप लोगों ने, राइट? कैसा? आप लोग बोलोगे कि सर हम लोगों ने तो क्या है, जो नोटपैड है, ओके, लेट मी क्लियर दिस, ओके, हम लोगों ने तो क्या देखा था कि सिलेंडर के फॉर्म में कुछ तो स्टोर होता है, ओके, सिलेंडर के फॉर्म में कुछ होता है, फिर ट्रैक्स के फॉर्म में होता है, ओके, फिर आप लोगों ने सुना रहेगा सिलेंडर, ट्रैक्स एंड देन व्हाट, दी सेक्टर्स, इसके फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो एंड ऑफ द डे सेक्टर या नहीं क्या, सेक्टर इज अल्टीमेटली ब्लॉक। सेक्टर इज व्हाट, ब्लॉक, क्योंकि सबसे लोएस्ट यूनिट क्या है, सेक्टर्स, ओके। सो द कंसेप्ट ऑफ सेक्टर इज अल्टीमेटली ब्लॉक हियर। सो आप हार्ड डिस्क का यूज कर रहे होंगे तो वहां पे बहुत सारे सिलेंडर्स आप लोगों को दिखाई देंगे। सिलेंडर्स के बाद साइड भी होता है उस पर्टिकुलर सिलेंडर का, कि आप ऊपर के साइड पे कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं या नीचे के साइड पे डेटा को स्टोर कर रहे हैं। सो सिलेंडर विल बी देयर, साइड विल बी देयर, ट्रैक्स विल बी देयर। आप लोगों ने मल्टीपल ट्रैक्स, एक सिलेंडर में मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, बराबर है, और एक ट्रैक में मल्टीपल क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, ओके। और इस सेक्टर का जो भी साइज है दैट वो 512 बाइट्स के मल्टीप्लिकेशन में होता है, सो दैट इज अल्टीमेटली नोन एज ब्लॉक। तो यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी था कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक व्हिच इज गिवन हियर, ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर यही कंफ्यूजन होता है कि सर ब्लॉक एग्जैक्टली क्या है। सो दैट आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड यू व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लॉक। आई होप दैट इज क्वाइट क्लियर नाउ। सो यहाँ पर ये जो भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ओके, ये हार्ड डिस्क है, और यहाँ पर ये जो भी है, दीज आर सेक्टर्स, और यू कैन कॉल इट एज ब्लॉक। जो भी आपको बोलना है आप यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जनरलाइज वर्ड दिया है डिस्क का, ये आपका पेन ड्राइव भी हो सकता है, हार्ड डिस्क भी हो सकता है, पुराने जमाने में फ्लॉपी डिस्क रहता था वो भी हो सकता है, आपकी जमाने में जो डीवीडी होता है वो भी हो सकता है, ओके। और आज के डेट में और अलग अलग मेमोरीज हमारे सामने आ रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके। This is known as file allocation methods, and you need to understand one by one what is it. So I have already cleared you about contiguous allocation. I once again repeat, contiguous allocation means what? कोई भी एक फाइल आप ले लीजिए, देखिए आप ये वाला फाइल यदि कंसिडर करते हैं काउंट वाला, तो ये काउंट वाला जो भी है ये फिजिकल एंट्री है, और उसका लॉजिकल एंट्री आप लोगों को दिखाई देगा। देखिए किस तरीके से लॉजिकल एंट्री किया गया है, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। द नेम ऑफ फाइल इज काउंट, ओके, इट स्टार्ट्स एट 0th ब्लॉक, ये ब्लॉक नंबर्स दिए गए हैं। Every block, like every sector, has number, okay, which is ranging from 0 to any of the number that depends on the size of your disk, okay। तो यहाँ पे साइज जो भी है डिस्क का वो क्या है, 32। यहाँ पे हम लोगों ने जो कंसिडर किया है 0 से लेके 31, यानी क्या, यहाँ पे जो भी साइज रहेगा वो रहेगा 32 ब्लॉक का, ओके। वो 32 ब्लॉक्स में हम लोगों ने क्या किया, 2 blocks are allocated to count। किस तरीके से allocate किए गए, 0 will be the starting point, and due to this contiguous word, memory is continuously allocated, that is 0 and 1। तो ये दो जो भी ब्लॉक है, 0th ब्लॉक और 1th ब्लॉक जो भी है, ये कंटिन्यूअसली क्या किए गए हैं, यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं, एंड दैट इज द रीजन इट इज नोन एज contiguous allocation। Now the next topic is linked allocation। I once again I'm telling you, I'm simply giving you overview, brief of this, okay। डिटेल में contiguous allocation क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप लोगों को यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक्सप्लेन शॉर्ट नोट ऑन फाइल एलोकेशन मेथड, और एक्सप्लेन contiguous allocation with detailed example, or compare contiguous allocation and index allocation, or there may be possibility which is the best method for index file access or sequential file access or direct file access, okay। So that we need to cover। तो मैं थोड़ा ये इसके बारे में डिटेल आपको बता दूं कि what exactly is linked or chain allocation। linked and chain allocation is telling you that here the directory structure will be like this। directory structure कैसे रहेगा, फाइल का नाम आपको यहाँ पर देना है, ओके, फाइल का नाम यहाँ पे आपको देना है, उसके बाद आप लोगों को उसका स्टार्टिंग एड्रेस देना है, और उसके बाद उसका एंडिंग एड्रेस देना है। सो स्टार्टिंग एड्रेस से आपको पता चलेगा कि आप यहां पर जाओगे, और देखिए ये लिंक्ड एलोकेशन या नहीं क्या, इसके बैकएंड में कौन है, तो इसके बैकएंड में है लिंक लिस्ट।
आप लोगों को लिंक लिस्ट याद होगा, सेकंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। लिंक लिस्ट यानी क्या, जहां पे स्टार्टिंग नोड आप लोगों ने दे दिया दैट इज 9 एंड एंडिंग नोड आप लोगों ने दे दिया, सो स्टार्टिंग पॉइंटर एंड द एंडिंग पॉइंटर इज गिवन, जिससे क्या होगा, आप किस तरीके से घूमने चले जाओगे, आप लोगों को यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई देगा कि आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आए, ओके, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, फिर यहाँ से ये वाले ब्लॉक पर आए, इस ब्लॉक से आप आगे के ये ब्लॉक के ऊपर गए, फिर उसके बाद आप ये वाले ब्लॉक के ऊपर आए, इस ब्लॉक के ऊपर आए, इस ब्लॉक के ऊपर आए, और यहाँ पर जैसे ही -1 आया इट इंडिकेट्स कि यहाँ पर ये आपका जो भी है एंडिंग पॉइंट जो है वो आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से दिस इज नोन एज द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट, सो इट इज नोन एज लिंक्ड। इसको चेन्ड एलोकेशन भी बोला जाता है। एग्जामिनेशन में आपको चेन्ड एलोकेशन या लिंक्ड एलोकेशन आएगा, वन एंड द सेम कंसेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर इसका जो भी कंसेप्ट है वो समझना जरूरी है कि लिंक्ड एलोकेशन एंड चेन्ड एलोकेशन दोनों सेम ही है। आप इसको लिंक्ड बोलिए या चेन बोलिए, क्योंकि चेन भी क्या होता है हमारा सिक्वेंशियल फॉर्म में जाता है, एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं वो लिंक होते जाते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, चेन। सो चेन्ड एलोकेशन एंड लिंक्ड एलोकेशन इज वन एंड द सेम थिंग। Let's focus on the last point, that is index allocation. Now as the name indicates index allocation, फाइल स्ट्रक्चर देखिए आप इसका किस तरीके से है। ये फाइल स्ट्रक्चर आपको क्या बोल रहा है, देयर विल बी वन ऑफ द इंडेक्स ब्लॉक। यहाँ पर क्या दिया जाएगा, इंडेक्स ब्लॉक दिया जाएगा, और ये इंडेक्स ब्लॉक जो भी है, ओके, ये इंडेक्स ब्लॉक जो भी है ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे एक ब्लॉक नंबर जो भी वो दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 19 ये ब्लॉक नंबर दिया गया है, ओके। और ये इंडेक्स ब्लॉक जो भी है इसमें स्टोर रहेंगे बाकी सारी इंफॉर्मेशन, ओके, इसमें स्टोर रहेगी आपकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन। यानी क्या, ये इंडेक्स ब्लॉक था 19 नंबर का, उस ब्लॉक में क्या क्या किया गया है, कौन से ब्लॉक नंबर्स आए हैं, तो देखिए इतने ब्लॉक नंबर आए हैं। यानी क्या, 9th ब्लॉक जो भी है उसमें डेटा स्टोर्ड है, यानी ये वाला ब्लॉक, सी दैट 9th ब्लॉक। उसके बाद 16th ब्लॉक पर डेटा स्टोर्ड है, यानी ये वाला ब्लॉक। उसके बाद डेटा फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर स्टोर्ड है, वो ये वाला। उसके बाद 10th ब्लॉक के ऊपर स्टोर्ड है, वो ये वाला है, ओके। उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि 25th ब्लॉक के ऊपर है, यानी ये वाला। और बाकी सब -1 यानी कि ये रिजर्व किए गए हैं फ्यूचर के लिए, यानी एक इंडेक्स में आप मैक्सिमम कितने ब्लॉक्स यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, उसका एक कैपेसिटी आएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके ब्लॉक का कैपेसिटी कितना है। तो ये वैरी होते जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को एक समझ में आएगा कि दिस वे यू कैन एबल टू अलोकेट व्हाट द ब्लॉक, दिस इज नोन एज इंडेक्स एलोकेशन, जहां पे सिंपली आपको एक ही ब्लॉक नंबर जो भी है वो स्टोर करना पड़ेगा। तो दोस्त यहाँ पे मेजर जो फोकस आप लोगों को करना है वो ये फोकस करना है कि सबके जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स है, ओके, सबके जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स है वो फोकस कीजिए। इन केस ऑफ कंटीग्यूअस एलोकेशन, इन केस ऑफ कंटीग्यूअस एलोकेशन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज लाइक दैट, जहां पे क्या दिया गया है आपको, फाइल, उसके बाद स्टार्टिंग ब्लॉक और लेंथ ये दिया गया है। इन केस ऑफ लिंक्ड एलोकेशन, इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को किस तरीके से दिया गया है, यहाँ पे आपको फाइल का नाम, स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस जो है वो दिया गया है, बिकॉज इट इज लिंक्ड एलोकेशन, ओके। देन यू विल गेट इंडेक्स एलोकेशन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उसका है वहां पे सिंपली आप लोगों को क्या क्या दिया गया, फाइल का नाम और इंडेक्स ब्लॉक, एक ही ब्लॉक नंबर यहाँ पर दिया गया। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको ज्यादा कैपेसिटी लगेगा टेबल के साइज को स्टोर करने के लिए, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, यहाँ पे और भी कम हो जाएगा। तो आप यदि ऑब्जर्व करोगे, जिस तरीके से आप यहां से यहां जैसे जैसे आओगे, ओके, यहां से यहां जैसे जैसे आओगे, वैसे फाइल टेबल का साइज क्या होते जाएगा, कम 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 होते जाएगा। दोस्तों ये भी हमें मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है, इसलिए इसके साइज के ऊपर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल अबाउट फाइल एलोकेशन मेथड। लेट्स गो इन डेप्थ, okay, and before we go in depth you need to understand why to study this, where exactly this particular topic is applicable. तो आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स जो भी है जो सेकेंड ईयर में आप लोगों ने देखे थे, ओके, वो कौन से थे, तो आप लोग यहाँ पर फोकस करें, ओके। आप लोगों ने ऑलरेडी ये वाले टॉपिक जो भी है ये सेकेंड ईयर में देखे हुए हैं कि ये क्या है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज नोन एज फाइल एलोकेशन मेथड्स। फाइल एलोकेशन मेथड यानी क्या, फाइल किस तरीके से अलोकेट की जाती है। तो आप लोगों ने देखा रहेगा कि सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड होता है, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड होता है, ये काफी फेमस है। आप लोगों ने ऐसा नाम सुना होगा, आइजैम, ओके। आइजैम यानी क्या, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, दिस इज नोन एज आइजैम, ओके। तो ये इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल है जो काफी फेमस है आज की डेट में, अभी भी लोग इसको यूज कर रहे हैं। There is one more part that is random or direct accessing method. तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि फाइल आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फाइल को आप सिक्वेंशियली क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इंडेक्स सिक्वेंशियली क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस के बेस के ऊपर आप लोग क्रिएट कर सकते हैं।
ये जो भी टाइप्स है फाइल के, इस पे आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जो भी फाइल आप क्रिएट करोगे सिक्वेंशियल के लिए आपको क्या यूज करना है, आइदर कंटिन्यूअस अलोकेशन मेथड यूज करनी होगी या लिंक्ड अलोकेशन मेथड आपको यूज करनी होगी. So that you need to understand. So इसके एप्लीकेशन क्या है, contiguous allocation का एप्लीकेशन क्या है, you can create sequential file using contiguous allocation. You can create sequential file using linked allocation. Okay, you can create index sequential file using index allocation. You can create random or direct access file using index allocation. These are the application of this file allocation method, and this is the motivation behind this file allocation method topic, and that is the reason today we need to focus in depth what exactly is contiguous allocation, then linked allocation, and finally we'll end up with index allocation. So let's focus one by one with the help of this particular PPTs. Okay, so I hope you will enjoy this particular topic, and if you have any difficulties, please you can raise your difficulties in chat window. So let's move towards what the contiguous allocation. Contiguous allocation is very easy topic. You need to understand, as the name indicates, contiguous, continuous, all are similar word. Many times in examination people make a mistake. Instead of contiguous they write continuous. So continuous, contiguous, one and the same thing. ओके, तो कंटिन्यूअस अलोकेशन यानी क्या, यहाँ पे सिंपली जो भी फाइल रहेगा उसको कंटिन्यूअसली ब्लॉक अलोकेट किए जाएंगे, कंटिन्यूअसली ब्लॉक अलोकेशन होगा. ओके, तो यहां पर आपको इसका थियरी समझना जरूरी है. व्हाट थियरी विच इज गिवन हियर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, very first particular part is each file occupies set of contiguous blocks on the disk. जो भी फाइल रहेगी उसको कंटिन्यूअस ब्लॉक जो भी है वो क्या किए जाएंगे, एक्सेस किए जाएंगे, एंड दिस इज द रीजन इट इज नोन एज कंटिन्यूअस अलोकेशन. Okay, this is the reason it is known as contiguous allocation. Next particular part is simple. Okay, this particular method is simple to implement. Okay, आप सभी लोगों ने contiguous allocation implement किया हुआ है ऑलरेडी, जब आप लोगों ने फाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया ना. ओके, तभी आप लोगों ने फाइल क्रिएशन का जो प्रोग्राम आप लोगों ने लिखा होगा वो आप लोगों ने contiguous file allocation का ही प्रोग्राम किया हुआ है. Okay, so that you have already done. So it is very simple to implement. Only starting location, that is block number, that you need to mention, and the length that you need to mention. तो यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देगा, जहाँ पे क्या है, फाइल का नाम आप लोगों को देना है. So this is the name of file which is given here. This is also the name of file. These are all ultimately known as what? These are ultimately known as all name of files. दूसरा, हर फाइल के साथ में आपको क्या देना जरूरी है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस, कौन से ब्लॉक से वो वाला फाइल स्टार्ट होगा, एंड द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल दैट यू नीड टू मेंशन. यहाँ पे दूसरा आपको क्या देना है, लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल, तो उस फाइल का लेंथ आपको देना होगा. तो देखिए यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिया हुआ है. ओके, सिंपली फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, बट आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. नाउ दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हैज दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, एंड दिस यू नीड टू फोकस. इस ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में फाइल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, काउंट स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है. ओके, एंड इट टेक्स हाउ मेनी ब्लॉक्स, लेंथ कितना है उसका 2. तो कितने ब्लॉक्स इसने लिए हैं, 1 and 2. तो 2 ब्लॉक्स इसने यहाँ पर क्या किए हैं, ऑक्यूपाई किए हुए हैं. तो इस तरीके से इसको क्या किया गया है, स्टोर किया गया है. सो दिस पर्टिकुलर एड्रेस जो आपका लॉजिकल एड्रेस था, ओके, ये जो लॉजिकल एड्रेस आपका है, यानी लॉजिकल नाम जो भी है फाइल का, दैट इज काउंट, वो फिजिकल वे से किस तरीके से स्टोर किया गया है, इस तरीके से, यानी वो 0 से स्टार्ट होता है और सेकंड पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. सो दिस इज रियली सिंपल टू इंप्लीमेंट. ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 1. नेक्स्ट, रैंडम एक्सेसिंग इज पॉसिबल हियर. ओके, रैंडम एक्सेसिंग इज व्हाट पॉसिबल हियर. ऐसा यहाँ पर दिया गया है, यानी आप कोई भी पर्टिकुलर फाइल के ऊपर जंप कर सकते हैं. ओके, बट इट हैज व्हाट लिमिटेशन. So this particular method is more recommended. Okay, it is more recommended for sequential access. It is more recommended for sequential access. अब sequential access क्यों बोला जाता है? अब देखिए, कोई भी फाइल आप लीजिए, जैसे मेल वाला फाइल हम लोग लेते हैं. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फाइल. हम लोग ये वाला फाइल लेते हैं, मेल, MAIL. It starts from the block number 19 and allocated 6 contiguous block. कंटिन्यूअसली कितने ब्लॉक अलोकेट किए गए हैं, 6. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 19. तो आप डायरेक्टली 19 के ऊपर जंप करोगे, इट स्टार्ट, दिस इज व्हाट द स्टार्टिंग ब्लॉक. उसके बाद आपको देखना है कि कितने ब्लॉक्स यहां पर है, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2,
3, 4, 5 एंड 6। ये जो हाईलाइटेड आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, दीज आर दी ब्लॉक्स अलोकेटेड टू दिस 19। ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस कंटिन्यूअस 6 ब्लॉक्स आर अलोकेटेड। और यहां पर आपका जो फाइल है मेल, ये क्या किया गया है, स्टोर किया गया है। इसी को हम लोग सीक्वेंशियल एक्सेस बोलेंगे। यानी आप पहले कौन सा ब्लॉक एक्सेस करोगे, 19, 19 से कहा जाओगे 20, 20 से कहा जाओगे 21, 22, 23, 24, लाइकवाइज आप लोग इसको स्टोर करोगे। और बैकएंड में आपको यदि इसको इंप्लीमेंट करना है तो बैकएंड में इसके पीछे कौन रहेगा, बैकएंड में, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो एरे इज ओनली नीडेड। ओके, इसके बैकएंड में क्या रहेगा, एरे। आप एरे का इस्तेमाल करोगे तो आप इसको क्या कर पाओगे, स्टोर कर पाओगे। और आप सभी लोगों को ये पता होगा कि एरे में हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग जंप कर सकते हैं। यानी क्या, ये जो भी ब्लॉक है 19, आपको यदि लगा कि 22 ब्लॉक के ऊपर आपको डायरेक्टली जाना है, आप कौन से ब्लॉक के ऊपर हो, 19th ब्लॉक के ऊपर हो, और आपको 19th ब्लॉक से, ओके, आपको 19th ब्लॉक से कहां पर जाना है, 19th ब्लॉक से आपको सीधा जंप करना है 22nd ब्लॉक के ऊपर। इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। ये कैसे पॉसिबल होगा, तो आप सभी लोगों को पता है कि यहां पर ये वाला ब्लॉक जो भी है 19, इसके कितने ब्लॉक आगे जाना है आप लोगों को, 1, 2। ओके, तो आप क्या करोगे, 19 प्लस यहां पर आपको कितने ब्लॉक आगे जाना है, 1, 2 एंड 3। तो आप लोगों को सिंपली लिखना पड़ेगा 19, ओके, एंड प्लस कितने ब्लॉक आगे जाना है, 3। तो आप ये 3 जैसे ही दोगे, आप डायरेक्टली रैंडमली यू कैन जंप, ओके, रैंडमली यू कैन जंप टू डायरेक्टली on this 22nd block number. So random access is possible. Okay, random access is possible in case of contiguous allocation. Next, wasteful of space, dynamic storage allocation problem. इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्या है, डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन, ये समझना जरूरी है। वेस्टफुल यानी क्या, काफी स्पेस आप लोगों का यहाँ पर वेस्ट हो सकता है। नाउ व्हाट इज इट, ये एग्जैक्टली क्या है डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन यानी क्या, ऐसे समझिए, इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है। सपोज आप लोगों ने क्या किया, यहां पर एक फाइल जो भी है वो बनाया, टीआर नाम का आप लोगों ने एक फाइल जो भी है ये लिया। ओके, ये टीआर फाइल जो भी है, इसका साइज आप लोग देखिए तो आपको समझ में आएगा। ओके, ये टीआर, मैं किसकी बात कर रहा हूं, टीआर इस फाइल। ओके, ये टीआर फाइल जो भी है, इसका स्टार्टिंग लेंथ कितना, क्या दिया गया है आपको, इसका स्टार्टिंग लेंथ दिया गया है 14, और कंटिन्यूअस कितने ब्लॉक इसमें अलोकेटेड है, 3 ब्लॉक्स इसमें अलोकेटेड है। सो यहां पर आपको समझ में आएगा, इट स्टार्ट्स एट 14, ओके, देन 3 contiguous block is allocated, 1, 2 and 3, ओके, और एंड कहां पर हो रहा है वो 16 के ऊपर। तो ये आपको समझ में आ रहा है, और आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि ये 2 ब्लॉक्स क्या है, फ्री है। ये 2 ब्लॉक्स आगे के क्या है, फ्री है। यानी आपको यदि लगा कि आप लोगों को टीआर क्या करना है, डायनामिकली मॉडिफाई करना है, आपको इसको रन टाइम पे क्या करना है, चेंज करना है। और जब जो भी आप चेंज कर रहे हैं, इस फाइल को आप लोग मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट यू नीड टू मॉडिफाई दिस फाइल। मॉडिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, यू विल ओपन दैट फाइल, देन यू विल ऐड द कंटेंट, और जैसे ये कंटेंट आप ऐड करोगे, ये सारे कंटेंट आपके कहां पर होंगे, इनिशियली इट विल बी प्लेस्ड एट रैम, इट विल बी प्लेस्ड एट व्हाट, रैम। ओके, और जैसे ही आप लोग बोलोगे कंट्रोल CTRL प्लस S, दैट इज कंट्रोल सेव, कंट्रोल S यानी क्या, आप सेव करोगे फाइल को। जैसे ही आप सेव प्रेस करोगे, तब ये वाला फाइल जो भी है, ये कहां से कहां चला जाएगा, हार्ड डिस्क में चला जाएगा। इट विल गो टू व्हाट, हार्ड डिस्क। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो जो भी डेटा हम लोग इनिशियली टाइप करते हैं वो रैम में जाता है। जैसे ही हम लोग सेव प्रेस करेंगे, ये कहां पर चला जाएगा, सीधा हार्ड डिस्क में चला जाएगा। तो यहां पर आपको ये समझना जरूरी है, जब आप कंट्रोल एस प्रेस कर रहे हैं, आपको पता चला कि जो कंटेंट आप लोगों ने ऐड किए, वट एवर कंटेंट दैट यू हैव एडेड, जो भी कंटेंट आप लोगों ने ऐड किए गए हैं, ये कंटेंट को यदि 3 ब्लॉक्स लगते हैं, कितने ब्लॉक्स लग रहे हैं, ये जो भी कंटेंट्स है इसको स्टोर करने के लिए यदि नेक्स्ट 3 ब्लॉक्स लगते हैं, अब देखिए आपको प्रॉब्लम क्या है। आपको कितने ब्लॉक लग रहे हैं, आपको लग रहे हैं 3 ब्लॉक्स, ओनली यू नीड 3 ब्लॉक्स। अब आपको समझ में आएगा कि इसके आगे ये फाइल कंटिन्यूअस एलोकेशन है, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर कंटिन्यूअस 3 ब्लॉक्स अवेलेबल है क्या, चेक करना होगा। 2 ही ब्लॉक अवेलेबल है, और तीसरा ब्लॉक जो है 19 वाला, ये ऑलरेडी क्या है, अलोकेटेड है। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि आपके पास कितने ब्लॉक्स अवेलेबल है, 2 ब्लॉक्स आर अवेलेबल। ओके, लेकिन आपको कितने ब्लॉक्स चाहिए थे, 3 ब्लॉक्स चाहिए थे। जब आपको 3 ब्लॉक्स चाहिए थे और आपकी रिक्वायरमेंट जो है उसमें 2 ही ब्लॉक्स यदि अवेलेबल है, तो क्या इस फाइल को आप सेव कर पाओगे? आंसर इज नो, यू कैन नॉट सेव दिस पर्टिकुलर फाइल। देखिए कितना स्पेस अवेलेबल है, आप देखिए कितना स्पेस अवेलेबल है, कितने ब्लॉक अवेलेबल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 ब्लॉक्स अवेलेबल होने के बावजूद भी आप ये वाले फाइल को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ डायनामिक स्टोरेज अलोकेशन। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? डायनामिक स्टोरेज अलोकेशन। और यहां पर आपको समझ में आएगा कि आपका जो स्पेस है वो क्या होता है, वेस्ट होता है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर you need to understand this is the severe drawback of contiguous allocation. अब यदि आप लोगों को ये मैनेज करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये सारे जो भी ब्लॉक्स है ये एक जगह पे शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू शिफ्ट, यानी शिफ्टिंग ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी कॉस्टली, विच इज एक्चुअली व्हाट कॉस्टली, ओके, नॉट रिकमेंडेड। तो आपको पूरे ब्लॉक्स, यानी आप जैसे एरे में डेटा को स्टोर करते हैं ना, बीच में यदि कुछ ब्लॉक्स फ्री है, आपको क्या करना पड़ेगा? बाकी जो भी डेटा है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। सो शिफ्टिंग विल बी डन, ओके। और उसके बाद आपको एक कंटिन्यूअस ब्लॉक मिलेगा, वहां पे आपको डेटा को क्या करते आएगा? स्टोर करते आएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ओके, दैट इज नोन एज डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव आल्सो प्रूवन दैट फाइल कैनॉट ग्रो। हम लोग इसको ग्रो करना चाह रहे थे, ग्रो करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसके आगे यदि ब्लॉक फ्री नहीं होगा तो प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है। सो दिस इज द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूअस अलोकेशन, ओके। तो कंटिन्यूअस अलोकेशन में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? उसको, ये सारे प्रॉब्लम्स को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, ओके। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन किसको बोला जाता है? स्पेस अवेलेबल है लेकिन डेटा स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हम लोग अलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। एंड दिस इज द सीवियर प्रॉब्लम नोन एज एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, okay, so this is the problem which is there in case of your contiguous allocation. Let's look at towards the next scheme, that is known as linked or chained allocation. We already done sufficient discussion on this. You need to focus here how it is actually stored. तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे दिया गया है? यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है, स्टार्टिंग पॉइंट देना है और एंडिंग पॉइंट देना है। जैसे ही आप लोगों ने वो दिया तो क्या होगा? आपको ये समझ में आएगा कि आप इजीली क्या कर सकते हैं। 9th ये वाला पॉइंट दिया है, आप 9th ब्लॉक के ऊपर डायरेक्टली जंप करोगे। देखिए ये वाला 9th ब्लॉक है, इसके ऊपर आप लोगों ने जंप किया। अब 9th ब्लॉक पे लिंक लिस्ट जैसा यहाँ पे इसने इसका डेटा तो स्टोर किया और इसको पता है कि आगे कौन से ब्लॉक पे डेटा जाना है। तो वो वाला जो भी नेक्स्ट जो भी पॉइंट जो नेक्स्ट जो भी ब्लॉक नंबर है वो कौन सा है? 16 नंबर। अब 16 को आगे पता होगा कि डेटा नेक्स्ट कहां पर स्टोर है, तो 16 ने आगे का एड्रेस जो भी वो स्टोर किया दैट इज 1, ये 1 में इसका डेटा स्टोर है। अब 1 को पता है कि इसके आगे डेटा कहां स्टोर है, तो डेटा जो भी है वो 10 के ऊपर स्टोर है, ये पता चलता है। 2 को आगे पता है कि वो डेटा कहां पर स्टोर है, तो यहां से आप यहां पर आओगे और जब आपको -1 मिल जाएगा इट इंडिकेट्स दैट कि आपको यहां पर रुकना है, यानी एंड पॉइंटर आपको मिल चुका है। दिस इज लिंक्ड लिस्ट स्ट्रक्चर, हेंस इट इज नोन एज लिंक्ड एलोकेशन और चेन्ड एलोकेशन। अगेन इट इज वेरी सिंपल, आप लोगों ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है लिंक लिस्ट, ओके। आपको सिंपली स्टार्टिंग एड्रेस ही देना है। स्टार्टिंग एड्रेस जैसे ही मिला, -1 जब तक नहीं मिलेगा तब तक चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। जैसे ही -1 मिल जाएगा, रुकिए, आपका पूरा फाइल एक्सेस हो चुका है। दिस इज 1 फ्री स्पेस मैनेजमेंट, ओके, सिस्टम इज ऑलरेडी यूज्ड। सो यहाँ पे स्पेस वेस्ट होने का इश्यू ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप यदि कोई भी एंट्री ड्रॉ करोगे, यदि आप लोगों को लगा कि आपको अब क्या करना है और एक फाइल यहाँ पर स्टोर करना है, ओके, और एक फाइल आपको स्टोर करना है, आप लोगों ने एक नया एंट्री यहाँ पर ऐड किया। सपोज आप लोगों ने एक नया एंट्री जो भी हो किस तरीके से ऐड किया, यहाँ पर आप लोगों ने नाम दिया कि टेम्पररी और टेस्ट फाइल, ओके। उसका स्टार्टिंग एड्रेस आप लोगों ने दे दिया 0th और एंडिंग एड्रेस उसका दे दिया 31। इस तरीके से आप लोगों ने दिया, ओके। स्टार्टिंग एड्रेस एंड एंडिंग एड्रेस आप लोगों ने दिया, ओके। अब ये कितने स्पेस कितने फाइल को स्टोर करने वाली है हम लोगों को नहीं पता, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग शुरू कर रहे हैं कि 0th एड्रेस बोला है तो हम लोगों को कहां जाना पड़ेगा दोस्तों? वी नीड टू गो टू दिस पर्टिकुलर फॉर्म। 0 से लेके आप कहां पर जाओगे? 0 से लेके आप यहां पर चले जाओगे, ओके। 0 से लेके आप यहां पर जा रहे हैं, ओके। तो जैसे आप यहां पर जाओगे आपको ये समझ में आएगा कि यहां पे आपको यहां से 0th लोकेशन के ऊपर मान लीजिए 4th के ऊपर आप चले गए, 4th से लेके आप लोग 15 के ऊपर चले गए, 15 से लेके आप लोग 7 के ऊपर चले गए, 7 से लेके आप लोग मान लीजिए 23 के ऊपर चले गए, और यहां पर आप लोगों को -1 लिखा हुआ है तो आप यहां से यहां पर आ गए। 23 ब्लॉक से कहां पर आ गए? यहां पर। तो आपको समझ में आएगा कि ये रेड वाला जो भी है, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ओके, ये सारे ब्लॉक में डेटा को हम लोगों ने क्या किया है? स्टोर किया है। इसको लिंक लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे कोई स्पेस आपका वेस्ट नहीं होगा।
Okay, but unfortunate part here, one of the drawback is no random accessing is possible. It is highly recommended for best for sequential file. ये किसके लिए बेटर है? Sequential file. यहाँ पे जो external fragmentation का प्रॉब्लम आपका contiguous allocation में था वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो एडवांटेज contiguous allocation का था जहाँ पे random accessing possible था जो यहाँ पर possible नहीं है. This is the only one severe drawback of linked or chained allocation. Rest everything is best. यहाँ पे और कोई fragmentation का issue आप लोगों को नहीं आएगा. Now the last topic, that is indexed allocation. Now this index allocation is telling you again you need to focus on the directory structure which is given like this. ये वाला directory structure यहाँ पर दिया गया है. इस directory structure में आप यदि देखोगे तो फिर से आपको simply file का नाम देना है और index block एक ही block जो भी है वो आपको देना रहेगा. So here we have given the name of file, that is zip, और यहाँ पर उसका starting address दिया है 19 और ये 19 जो भी है ये यहाँ पर अवेलेबल है. ये 19 कहाँ पर अवेलेबल है? यहाँ पर. और ये 19 ब्लॉक को यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाया गया है. ओके, इसको जूम करके यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जा रहा है जहां पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन से ब्लॉक के एड्रेसेस है. तो 9th ब्लॉक, 16th ब्लॉक, 1, 10, 25 इतने ब्लॉक्स यहाँ पर क्या किए गए हैं, ऑक्यूपाई किए गए हैं जीप ये नाम का फाइल स्टोर करने के लिए. तो यहाँ पर भी आपको बेस्ट पार्ट समझ में आएगा कि यहाँ पे ये वाला इधर जाके स्टोर करेगा, इधर स्टोर करेगा, इधर स्टोर करेगा, ये जाएगा, ये जाएगा. तो यहाँ पर देखिए एक बेस्ट पार्ट क्या है. यहाँ पर एक तो आप सिक्वेंशियली भी इसको एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस, और रैंडम एक्सेसिंग भी कर सकते हैं. तो सिक्वेंशियल और रैंडम दोनों भी यहाँ पे पॉसिबल है. ओके, इसीलिए इसको इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल जो भी है उसके लिए मोस्ट रिकमेंडेड सॉल्यूशन है, और डायरेक्ट एक्सेस के लिए भी ये मोस्ट रिकमेंडेड सॉल्यूशन है, दैट इज इंडेक्स अलोकेशन. सिर्फ यहाँ पर एक सीवियर ड्रॉबैक क्या आएगा, अननेसेसरीली आपका एक ब्लॉक यानी जितने भी फाइल्स आपके रहेंगे उसके लिए एक ब्लॉक आपको सिंपली रिजर्व करके रखना पड़ेगा. तो 10 फाइल रहेंगे तो 10 ब्लॉक आपके इंडेक्स जो भी है वो स्टोर करने में क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे. उतना एक वेस्टेज ऑफ स्पेस यहाँ पर होता है. बाकी सारे इसके एडवांटेजेस ही है. एडवांटेजेस इसके क्या है, तो ये आपको दिखाई देगा कि देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, बेस्ट फॉर रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस फाइल एज वेल एज इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल. ये कोई भी टाइप के फाइल को आप इंडेक्स एलोकेशन का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. लॉजिकल व्यू आप लोगों को इसको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर जो भी ब्लॉक्स है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ये सारे जो भी है ये इंडेक्स टेबल में क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं. और ये इंडेक्स टेबल कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, एक कोई तो भी ब्लॉक में. सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द इंडेक्स एलोकेशन. सो आज का मेरा जो एक्चुअली टारगेट था डियर फ्रेंड्स वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ. ओके, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क. मीनवाइल मैं आप सभी लोगों को आप लोगों को समझा है या नहीं उसके लिए क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक पोल लॉन्च कर रहा हूं. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू आंसर टू दिस पर्टिकुलर पोल. ओके, आई एम लॉन्चिंग द पोल इज इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, मार्क दिस पर्टिकुलर पोल. दिस विल बी ट्रीटेड एज योर अटेंडेंस. योर टाइम इज अप नाउ. This poll will be available to you for 1 minute. Already 30 seconds are passed. Last 20 seconds. I can see here out of 51, almost 38, 37 students have enrolled their answer. Okay, but I can see there are 51 students which are available, because 3 are teacher, myself, then SNJB, KBJ, COE and Shrikant Park. Last 5 seconds and then I'll end the poll. जिन लोगों को पोल क्लिक करने में प्रॉब्लम आ रही होंगी, काइंडली मेंशन योर नेम ऑन चैट विंडो so that your attendance will be considered. Okay, I'll end the poll now. 41 students have given what this poll, sorry, 42 students have given this particular poll. So I can say that 42 students are, you know, they are actually, okay, some students are mentioning here their name. Okay. Okay, so I have given, yeah, only one question in poll today. So what is that question? Which method has an issue of external fragmentation? Okay, and the options are contiguous allocation, linked allocation, index allocation, and the last option is all of the above.
Right answer is contiguous allocation, and 67% students have given right answer. Hearty congratulations to you. Those who have given index allocation and all of the above, it is wrong, because contiguous allocation में ही सिर्फ और सिर्फ external fragmentation का problem आता है. Linked allocation में और index allocation में external fragmentation का problem आता नहीं है. So right answer is first choice, that is contiguous allocation. So dear students, I hope you might have enjoyed. I'm sharing the results with you all. You might have enjoyed this particular poll as well as what today's session. If you have difficulty, please rate it into what the chat window, or you can unmute yourself and you can ask. You can ask, dear students. If you have doubt, please ask. Meanwhile, thank you, sir. I hope all the third year IT students have understood what is the file allocation and can relate to the real world, that how this continuous allocation and the secondary memory and how these things are being managed. So how operating system actually helps the data to be stored. So I really hope all the students have understood the main topic of Unit 5. This is the heart of Unit 5, file allocation. And thank you, sir. Thank you. Yeah, indeed, thanks to you, madam, for the opportunity, because I'm really happy to always teach about this particular operating system. This is also one of my favorite subjects. Okay, Yes. dear students, if you have any questions, please raise it into what your on chat window. Okay, meanwhile, I'll simply share with you that where exactly you will get the notes or the presentation of this particular slide. Simply you need to go to what? You need to go to my blog, that is maheshsanghvi.com. Okay, simply go to my blog. Once you go to this particular blog, you have to go to this expert talk. Where you have to go? You have to go to expert talk. ये एक्सपर्ट टॉक के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आपके पास क्या आएगा? ये वाला एक्सपर्ट टॉक, दैट इज 2020-21. वहां पे आप लोगों को क्लिक करना रहेगा. जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर नजर आएगा, ओके, यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा कि ये वाला जो भी सेशन है, ये अपना सेशन है आज का. ओके, और ये फाइल जो है ये डाउनलोड करते आएगा. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो, ओके, ये पर्टिकुलर वीडियो जो भी है, ये आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा. ओके, आप मेरे ब्लॉग के ऊपर कभी भी जाओगे तो आपको ये वाला वीडियो जो भी है ये अवेलेबल होगा. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट वीडियो अभी तक का सारा देखिए लाइव चल रहा है. ये यहाँ पर क्या है? स्टोर्ड है. तो एनी टाइम इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, यू कैन इवन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो आल्सो. ये वाला जो भी लिंक है मैं चैट विंडो के ऊपर आप लोगों को डाल देता हूँ, सो दैट whenever you have any doubt, you can anytime go through this particular video. Okay, this is what from my end. If you have difficulty, you can please raise your hand or you can ask your difficulty. At least somebody of you should ask the difficulty or give to this session quickly, because you have 3 minutes for the next session. Can anyone will take initiative and give me the real feedback of today's session? Can you please? Anyone fast? Dear students, grab the opportunity. Never lose such type of opportunity when somebody is giving you opportunity to speak on this particular topic. Anyone, any language will be permissible. कोई भी language में आप बोलिए, हिंदी भी चलेगा, मराठी पण चालेल, कोणती. Fast, anyone. I can see 45 students, 44 students are there. Before you leave, at least one of you give me the feedback. तुमच्यापैकी कोणी पण एक. Anyone. Hello, sir. Yes, Rutuja. Sir, session is very good and I can understand whatever you taught today. Okay. That's great. Thanks a lot. Thank you all. Thanks to special thanks to the Sinha madam as well as Shrikant Mark sir for supporting me in this particular session. Thank you, sir. Hello. Yes. And thanks, sir, for sharing this PPT, today's PPT. Yeah, my pleasure. Thank you. Thank you, sir. Yeah.